मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो गई है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हरी झंडी दिखाकर इन यात्रियों को रवाना किया है। यात्रियों के 18 बैचेस हैं, हर बैच में 60 यात्री हैं। ये यात्री नाथोला के रास्ते मानसरोवर जाएंगे, जबकि 10 बैचेस लापोला के रास्ते से जाएंगे। हर बैच के साथ 2 ऑफिसर्स रहेंगे जो कि इन यात्रियों की तमाम तर सहूलियात का खास ख्याल रखेंगे। आपको बताएं कि ये यात्रा 1981 में शुरू की गई थी। एस जयशंकर ने यात्रा का आगाज करते हुए चीन का इस यात्रा में ताउन के लिए बेहद शुक्रिया भी अदा किया। आज हम कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 का शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजक। The Ministry of External Affairs feels very privileged to be part of this initiative for facilitating the Kailash Mansarovar Yatra. This has been a yatra which has started in recent times from 1981, and over the years the interest in this pilgrimage has increased very significantly. Now I would like to share with you a personal experience which I myself had in 2012. I had the privilege of visiting Mount Kailash, not in the way in which you are all going to do through Lipu Lake or Nathula. I actually was ambassador in China at that time, and I went from Lhasa. In many ways, my journey was very much easier than what all of you are going to do. But I want to just tell you something, that whatever is in your mind about what you will see, what, the biggest thing in your imagination, when you actually reach there, what you will see is something far, far beyond anything you imagine.